दो और ऐड करते जाओ जस्ट टू गिव यू द लुक ऑफ द फसाड। ओके, वैसे टाइप मैसिव एक्सटीरियर स्ट्रक्चर का होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द फेलियर एंड देयर टाइप्स। ओके, तो आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ फेलियर्स दिखेंगे जब एक हजार्ड हो रही है, जब एक डिजास्टर हो रही है। लेट्स से अर्थक्वेक के टाइम। ओके, जैसे मैंने सॉफ्ट स्टोरी बताया था, दैट्स स्लाइटली मोर lesser stronger story, right? So if your lower story is less strong, let's say for example आपने यहाँ पे गराज रख दिया या आपने पार्किंग के लिए स्ट्रीट फोर्ड छोड़ दिया, वो आपकी जो ऊपर फ्लोर्स है उससे काफी वेट कम स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जो है वो आप जैसे एक्सपेक्ट किया आपने वैसे काम नहीं करेगा। ओके, so what do? You reinforce it using modern design methods such as additional shear walls or moment frames. Okay, तो मोमेंट फ्रेम्स विथ इन्वर्टेड व्यू बेंड्स, अगर आपको एक्सेस चाहिए, जैसे अगर आप पार्किंग के लिए रीइंफोर्स करना चाहते हो, तो मोमेंट फ्रेम्स विथ इन्वर्टेड व्यू बेंड्स आपके लिए वहां पे यूजफुल हो जाएगा। ओके, बट अगर आपको कॉस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए ये रेट्रोफिटिंग करते वक्त, तो आप शेयर वॉल्स एंड ट्रसेस काफी जगह पे, मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे यूज करके उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर सॉफ्ट स्टोरी वेयर यू आर जस्ट रीइंफोर्सिंग योर मोस्ट बेसिक ग्राउंड लेवल का फ्लोर। फिर बीम कॉलम जॉइंट कनेक्शंस जो है, वो कॉमन स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है। ओके, व्हेन यू आर से डीलिंग विद सीस्मिक रेट्रोफिटिंग। ओके, तो यूजुअली क्या होता है, पहले ये बीम कॉलम जॉइंट्स जो है वो नॉन इंजर्ड होते हैं, वो उतना डिटेल डिजाइन वगैरह होता नहीं था। ओके, बट बाकी मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वी हैव started using concrete or steel jacketing. Okay, ये जो concrete or steel jacketing है, that was very popular until you started using FRP. Okay, तो कार्बन FRP या तो अरामिक FRP जब तक इंट्रोड्यूस हुआ था तब तक वी यूजिंग कंक्रीट एंड स्टील का जैकेटिंग। FRP is nothing but fiber reinforced polymer, so that's more commonly used right now. Okay, apart from this there's another method. Okay, it's a very new technique, it's even more latest than the FRP, where you selectively weaken the beam. Okay, और जो पोस्ट टेंशनिंग हमने पहले पहले स्टार्टिंग में देखा था, जो टेक्निक्स में देखा था, okay, you add that external post tensioning and you achieve this flexural hinging of the beam. Okay, that's one very new method that has been followed. One second. So when I say flexural hinging, it's basically uh, up रोटेशनल मोशन को अला करोगे। ओके, दैट इज योर बेसिक लॉजिक, एंड हिंज की तरह यूज करेगा, बट देन इट विल बी बिटवीन टू रिजिड बॉडीज। तो आपका जो बीम और कॉलम है यहाँ पे वो दोनों रिजिड रहेंगे, और जो एक्सटर्नल पोस्ट टेंशनिंग और सेलेक्टिव वीकनिंग के साथ यू विल एंड अप creating a slightly more rotational motion, allowing जगह। So that is a beam cone. The third type of, मतलब, okay, so we're looking at different function, मतलब different जगह पे where you have failure happening, और उसका solution क्या क्या हो सकता है। okay, तो बीम कॉलम जॉइंट और सॉफ्ट स्टोरी जो ग्राउंड फ्लोर पे या तो बेसमेंट ऐसे वाला जगह पे होता है। यूजुअली इट्स अबव द ग्राउंड, इट्स नॉट रियली इन द बेसमेंट, बट कभी कभी आपका जो पार्किंग है उसका एग्जिट विल बी अबव द ग्राउंड, राइट? तो वैसे वाले केसेस में पहला टू आ जाता है। ओके, सो योर थर्ड इज योर shear। ओके, तो shear failure with floor diagram, floor diaphragm is your third। इसमें जो है इट डील्स मोस्टली विद वुडन बिल्डिंग्स। ओके, तो क्या होता है, जो वुडन बिल्डिंग्स की फ्लोर है, आप जॉइस्ट या डीप स्पैन्स ऑफ वुड जो है, यू विल बी हैविंग ऑल ऑफ दैट इन वन लाइन। ओके, एंड आप एक डायगोनल वुड प्लैंकिंग या तो प्लाईवुड के साथ उसको उसके ऊपर सब फ्लोर बना के उसके ऊपर यू विल ले डाउन द फिनिश फ्लोर। मतलब you will have multiple layers is what I'm saying. Okay. So if you see a wooden floor, you will see that you have joists lined up like this. उसके ऊपर आप एक diagonal ये के साथ you will lay a subfloor. Okay. So if you see the underside of this, मतलब नीचे से अगर देखोगे आपको ये joist वाला member दिखेगा, but आपको ऊपर से नहीं दिखेगा ये member, आपको एक even floor ही दिखेगा। Okay. So इसके even floor के ऊपर you will have the finished floor level या tiling जो भी करना है, usually wooden floors जब होता है तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते रखते हैं। नाउ व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर हजार्ड हैपनिंग, ओके, जो बीम्स है उसको टिपिंग ओवर टू द साइड करने से बेटर दे एड ब्लॉकिंग। ओके, सो यू बेसिकली
add blocking on both of the ends for additional stiffness. And और भी अगर stiffness चाहिए तो blocking or more of diagonal wood and more of metal bricks. So the best way, okay, let's say you have a room here और वो एक square है, आपको इसको थोड़ा strong करना है तो क्या करोगे आप diagonal elements add करोगे, okay? तो wood में वो commonly diagonal elements आपको देखने का मौका मिलेगा, okay? That is what they maximum use. So your blocking or your diagonal wood and metal bracing will be placed between your beams, okay, along the span. Now, usually क्या होता है outer edge पे एक single depth of blocking and a perimeter beam लगा देते हैं, okay. This is in case of say a particular in general safety के लिए. अगर retrofit करना है तो क्या करोगे single depth के place में double depth रखोगे. Your blocking will be double, okay. और जो sill plate of wall है perimeter wall and floor diaphragm. So your perimeter wall is the outer wall and floor diaphragm. इनके बीच में जो है ये जो प्लेट है यहाँ पे आप नेलिंग भी करोगे, ओके. सो यू विल नेल ऑल ऑफ दीज वुडन प्लैंक्स टू दोस wall ka elements and the floor ka elements, okay. And if at all blocking or nailing is not enough, so again you end up putting more shear forces to the building and then you make sure each beam is laid flat, etc. मतलब ये बहुत rarely होता है. Usually they take all of these wooden elements, lay it down, lay a floor over it, lay diagonal elements. That is the most common method that is followed. Okay, तो ये wooden buildings में shear failure with floor diaphragm is the common. Now we also have multiple piers in shallow pits. Okay, तो इसमें क्या है? Sometimes when you have older low-cost structures, they're elevated on tapered concrete piles. So older इसको why do they do it? Let's say पहले शैलो पिट की तरह कुछ बना देते हैं, फिर थोड़ा पाइलॉन की तरह कुछ रख के दे एड लाइक अ हाउस ओवर इट, या यहाँ पे आउटर डेक से कनेक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ओके. सो डैम्प सॉइल की कंडीशंस में क्या करते हैं, दे डोंट डायरेक्टली अटैच इट टू द ग्राउंड because they want some ventilation in that. मतलब this is a passive technique that they do. Okay, तो tropical condition में या तो damp soil में जब होते हैं एक dry ventilated space नीचे रहता है. Okay, and if at all you're using like if this is मतलब this is basically thermal resistance का एक और method. Okay, जैसे कि आप अगर वॉल के बीच में गैप्स वाला hollow blocks या ऐसे कुछ चुन लोगे तो ऑटोमेटिकली इट reduces. वैसे if at all you're doing this in a very cold area, फिर यहाँ पे जो जगह है दैट विल कीप इट वार्म, ओके. तो थोड़ा फ्रोजन मड से आपको ब्रेक मिल जाएगा, उसके लिए दे डू दिस, ओके. बट क्या हो जाता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ये जो पाइलॉन्स ये जो कॉलम्स की तरह छोटे छोटे नीचे है वो ब्रेक हो जाता है या तो टिप हो जाता है, ओके. उसको उस पे क्या हो जाता है व्हेन दीस टिप और व्हेन दीस ब्रेक ऑटोमेटिकली ये बिल्डिंग को गिरा देता है नीचे ग्राउंड पे, ओके. सो इसको कंटेन करने के लिए इसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट डू यू हैव टू यूज डीपली बोर्ड होल्स. Okay, and then you have to cast in place reinforced pylons, reinforced concrete pylons, so that floor panels जो है at the corners of the building उसको ground के साथ थोड़ा attached रहे, okay. तो deep board holes के लिए and then कभी कभी diagonal bracing भी add कर लेते हैं, okay. So this is another technique. And if not diagonal bracing, you can also add sections of concrete shear walls between all these pylons. That's another method besides this, okay. Sections of concrete shear walls between the pylons. The next is uh, reinforced concrete column burst. Okay, so reinforced concrete column burst में क्या होता है? Usually उनके पास one second. तो usually उनके पास they have large diameter, okay, vertical reinforcing bars that are arranged in like a ring. That's there, right? So that's a column. Okay, and whenever you have say earthquake, okay, तो vertical bars में जो है उसमें issues नहीं होते जो concrete columns में. उसमें it usually the issues come in the hoops या जो rings है उसमें आता है. तो जो hoop है उसका integrity चला जाता है. और जो वर्टिकल मतलब व्हाट इज दिस रिंग डू बेसिकली होल्ड ऑल ऑफ द वर्टिकल बार्स टुगेदर, राइट. तो अगर ये रिंग वीक हो जाता है जो वर्टिकल बार्स है वो ऑटोमेटिकली दे नॉट हेल्ड इन प्लेस टुगेदर, वो ऐसे ऐसे हो जाता है और दे माइट कम आउट ऑफ देयर ओरिजिनल प्लेस एक्सेट्रा, राइट. तो क्या होता है कंक्रीट थोड़ा थोड़ा क्रम्बल होने लग जाता है एंड ऑटोमेटिकली इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर स्ट्रक्चर का एंटायर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो क्या करते हैं
you basically